Hello, good morning, friends. Today we'll discuss in acid, bases, and salts, that is neutral. Okay. Neutral. Let us start the topic neutral first. After that, we will discuss about pH scale. Okay. Range of pH scales, function of pH scales, and after that, we will discuss about keywords and questions inside of this chapter. Okay. So let's start this chapter. What is neutral? First question is what is neutral? We already had discussed about acidic and basic nature. Okay. The third nature is neutral. Okay. Third nature of the substance is neutral. What is neutral? Neutral is a substance which is neither acidic nor basic in nature. Okay. It is a substance which is neither acidic nor basic in nature. Okay. Example: distilled water. It means to say that if we identify a neutral substance on a litmus paper, it turns no color change. Okay, it turns no color change. That means it is a neutral substance. Okay, distilled water is an example of neutral substance. Okay. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सबस्टांस जो कि ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, उस सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सबस्टांस. ओके. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर. ओके. नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल. पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल pH stands for potential of hydrogen. Okay, potential of hydrogen या power of hydrogen कहते हैं इसको. Okay, its range between 1 to 40. Okay, it is used to identify how the substance is acidic and basic. Okay, तो कोई भी सबस्टांस को ये क्या करता है? मेजर करता है कि वो सबस्टांस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. ओके. तो उस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं. ओके. इट्स रेंज बिटवीन 1 टू 40. इसका रेंज 1 से 40 तक होता है, जहां 1 टू 6.9 जो है ये एसिडिक नेचर शो करता है. ठीक है. 7 जो है ये न्यूट्रल शो करता है और 7.1 टू 40 ये बेसिक शो करता है. तो आई होप न्यूट्रल और पीएच स्केल में आपका क्लियर हो गया होगा. ओके. लेट्स start the keywords of this chapter now. Keywords. In the keyword, the first keyword is acid. What is acid? So acid is a chemical substance which tastes sour. Okay. It turns blue litmus to red. Okay. Example: nitric acid, citric acid, sulfuric acid, etc. Next, what is acidic? It is a substance which contains acid is known as acidic. Okay, यानी कि ये एक ऐसा सबस्टांस है जो कि एसिड अपने में रखता है. ठीक है, उसको हम एसिडिक कहते हैं. ओके. नेक्स्ट है बेस. Base is a chemical substance which tastes bitter and feels soapy on touching. Base क्या है? एक chemical substance है जो कि bitter taste का होता है और जब हम उसे छूते हैं तो साबुन की तरह उसमें फील आती है. ठीक है, that is base. नेक्स्ट है आपका बेस का एग्जांपल आप क्या लोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बेस. नेक्स्ट है आपका बेसिक. तो the substance which contain base is known as basic. Okay. Next है indicator. Indicator क्या है? Indicator is a substance which identify the nature of the solution. Okay. Nature of the solution. Okay. Either acidic or basic. So nature of the solution में क्या रहेगी? वो acidic nature show करेगा या basic nature show करेगा? ये identify करता है indicator. Okay. Next is neutral. Neutral अभी मैंने बताया the substance which is neither acidic nor basic is known as neutral. Example:
distilled water. Next is neutralization. Neutralization is a process in which acid react with bases to form a salt and water. It's known as neutralization. Neutralization का एग्जांपल क्या दोगे? तो HCl लिखोगे यहाँ पे प्लस NaOH लिखोगे, gives NaCl प्लस H2O. आप यहाँ पे देखोगे HCl एक एसिड है, NaOH क्या है? बेस है, और ये क्या है? NaCl तो सॉल्ट है, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है, और ये क्या है? वाटर है। ठीक है, तो आपको HCl न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या क्या हो रहा है? HCl यानी कि एसिड जब रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट में सॉल्ट क्या होता है? जैसे कि अभी हम न्यूट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा अभी कि व्हेन बेस एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट। ओके, so salt is a substance which we get when acid react with bases. Okay, salt, example of salt would be NaCl. Okay, NaCl would be the example of salt. So I hope your keywords is clear now. Okay, now let's start the question answer of this chapter. Okay, what about question answer? Let's say the first questions, that is state difference between acid and bases. Difference between acid and bases. It is very simple question. Okay, the answer of this question would be, यहाँ पे आप acid लिखोगे, यहाँ पे आप base लिखोगे. Okay, the first difference, it is sour in taste. Okay, and it is bitter in taste. Okay, second is it turns blue to red litmus. It turns red to blue litmus. ठीक है, there are various differences between acid and bases. The third would be base acids does not feel soapy on touching, while base feels soapy on touching. Okay, I think three differences is sufficient for this question. Okay, next is ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? Okay, so here is ammonia. Ammonia is found in many household products. मतलब बहुत सारे household products में हम लोग अमोनिया बहुत यूज करते हैं. ठीक है, household में लिखा है. तो अमोनिया यहाँ पे जनरली यूज होता है विंडोज क्लीनर में. ठीक है, विंडोज क्लीनर के रूप में यूज होता है. एंड अमोनिया का क्या प्रॉपर्टी दिया गया है यहाँ पे? इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. ये रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है, तो आपको देखा बेस में अभी हमने पढ़ा है इट टर्न्स रेड टू ब्लू. ठीक है, यानी कि व्हाट इज इट्स नेचर? अमोनिया का पूछा है इसका नेचर क्या है, तो ऑब्वियसली ये रेड टू ब्लू अगर कन्वर्ट कर रहा है तो ये बेस होगा. तो यहाँ पे लिखोगे द नेचर ऑफ द अमोनिया इज बेसिक. ओके, नेक्स्ट, then the sources from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Okay, so as we discussed in the definition of litmus, it is a natural indicators which we obtain from lichen. Okay, lichen is the source of the litmus. Okay, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आंसर will be lichen. What is the use of this solution? It is used to identify the nature of the substance.
Okay. Next is the distilled water acidic, basic, neutral? How do you verify it? Okay, distilled water neutral. Okay, distilled water is neutral. We will verify it by using indicator. Okay, put some drops of distilled waters on the litmus papers. If it makes any changes, then it would be acidic or basic. If it makes no changes in color, then it is neutral. Okay. Next question is, describe the process of neutralization with the help of an example. Process of neutralization. Already discussed in keywords. Neutralization. It is a process in which acid react with bases to form salt and water. It is known as neutralization. Okay. For example, this is the example HCl plus NaOH. Acid hearing hydrochloric acid, sodium hydroxide gives sodium chloride plus water. Okay. This is the example of neutralization. Okay. Now, question number 6. Mark T if the statement is true and F if the statement is false. Nitric acid turns red litmus blue. Nitric acid turns red litmus to blue. No, because acid turns blue litmus to red. Okay, so it is false. Next is sodium hydroxide. Sodium hydroxide turns blue litmus red. Sodium hydroxide, blue to red, okay, blue to red is the nature of acid, not base, okay, and sodium hydroxide is base, so it is also false. Next is sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralizes each other and form salt and water. Yeah, it is true, okay, sodium hydroxide plus hydrochloric acid mixed together to form salt and water. Yeah, it is true. Okay, third one is true. Next is indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution. Okay, indicator. Yeah, indicator कोई भी substance को अगर डालते हैं तो वो अपना नेचर शो करता है एसिड और बेसिक शो करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए. हाँ बिल्कुल ये सही है, अपना वो कलर चेंज कर देता है. ये फोर्थ वन इज ट्रू. Tooth decay caused by the presence of a base. ठीक है? No, it is false because tooth decay caused by acid, not base. Okay? By base, we can get relief from tooth decay. Okay? Now, come on to question number 7. Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant. Okay? दौड़जी के रेस्टोरेंट में कुछ बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स रखी हुई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस आर नॉट लेबल्ड. लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, इस बॉटल में लेबल्ड नहीं है कौन सा बॉटल एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है. ओके, ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स. उसे उस बॉटल्स को यानी कि ड्रिंक को सर्व करना है कस्टमर की डिमांड पे. ओके, वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक. एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए, बेसिक चाहिए, तीसरे को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए. ओके, हाउ विल दोर्जी डिसाइड व्हिच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू हूम. ठीक है, दोर्जी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी बोतल किस कस्टमर को दूं, बिकॉज द बोतल वाज नॉट लेबल्ड. ओके, तो द आंसर वुड बी दोर्जी विल decide which bottle contain acidic, basics or neutral by the help of indicator. Okay, by the help of indicator. Next is explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. Antacid tablet is generally a base. Okay, and where it is taken while acidity, this tablets neutralizes the acid in the stomach, okay, and get relief from pain. Okay, acidity क्या होता है, आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि स्टोमक जो है HCl को रिलीज करता है. ओके, HCl को रिलीज करता है. तो ये क्या होता है, जब एक्सेस अमाउंट में HCl जब रिलीज होने लगता है तो एसिडिटी हो जाता है.
स्टोमक में, ठीक है। उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बेस या इनो लेते हैं, ठीक है। इनो इज आल्सो बेस, ओके। वही एंटासिड टैबलेट जो है दैट इज बेस, ओके। तो एसिड्स को क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। स्टोमक में जो हमारा एसिड रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम एंटासिड टैबलेट अगर लेंगे तो क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा और वो सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, यानी कि एसिड को खत्म कर देगा, ठीक है। तो हमारा एसिडिटी फिर से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, calamine solution is applied on the skin when an ant bites, okay, and as we know the sting of the ant contains formic acid, okay. When ant bites on the skin, it releases formic acid into the skin, okay. And we use calamine solution, okay, we use calamine solution on the skins where ant bites, okay, where ant bites. This calamine solutions neutralizes the formic acids, okay, and we get relief from ant bites, okay. So next question is, factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies, okay. Manufacturing wastes contains acid, okay. Manufacturing wastes contain acids, and if manufacturers would if manufacturer would directly dispose their wastes into the water body, it may harmful for aquatic animals, okay. That's why before disposing it into the water body, we should neutralize it first, okay. After neutralization, the acid containing wastes would be neutralized and converted into salt and water, okay. After that, we will dispose it, okay. So the factory waste is neutralized before disposing it into the water bodies, because factory waste contain acid, okay, and it may harmful for aquatic animals, okay. The answer is sufficient, okay. Next is, three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, second is sodium hydroxide, and third one is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicators. As we know the function of turmeric indicator, okay. What is turmeric indicator? Turmeric indicators is the natural indicators which indicates acidic solution. When we drop acidic solution on the turmeric indicators, it turns no color change or deep yellow, okay. And if it drops, if you put some drops of basic solutions on a turmeric indicator, it turns yellow to red, okay. So the answer would be put few drops of hydrochloric acid on turmeric indicators. It turns deep yellow, dark yellow color, okay. It shows that the given solution is what? Given solution is acidic. Put few drops of basic sodium hydroxide on the turmeric indicators. It turns yellow color to red, okay. It means the given solution is basic, okay. Next one is what? Sugar solution. Put some few drops of sugar solutions into the turmeric indicators. It turns no changes, okay. It means the given solution is what? Given solution is neutral, okay. So come on the question number 10. Blue litmus paper is dipped in a solution. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? Explain. Okay. So blue litmus paper. अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं हम, तो क्या होता है, वो ब्लू का ब्लू रह जाता है। तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या, एक्सप्लेन कीजिए, ओके। सो as we know the properties of litmus, when acidic solution, when we dip the litmus papers into acidic solution, okay, it turns blue to red. And when we put that
litmus paper into a basic solution, it turns red to blue. Okay. So in these questions, there are no changes when we dip litmus paper into solution. Okay, it remains blue. It means the given solution either neutral or basic. Okay, the answer would be uh, when we dip blue litmus papers into the solution. Okay, it remains blue because the solution would be either basic or neutral. Okay, the answer is finished. Next questions. Consider the following statements. Consider the following statements. Both acid and bases changes colors of all indicators. Both acid and bases. No. It can't change color of all indicators. Okay. So it is false. It is not true. If an indicator gives a color change with an acid